Please unmute. So we have completed this one, and this one. So we have to start with land and sea breeze. Already I put the heading. So if you remember what is land breeze and what is sea breeze, how does a land and a sea breeze, the exam they will ask you. Why does a land heats quickly and cools quickly? Because land can absorb it quickly and release it. How about water? There are various streams. Even when you are making tea, whatever in your house, you see the bottom part only first heated up. And what is that moving? Convection currents. So normally we say due to the differential heating and cooling of land and Seas. water. Now what is caused? Land breeze during daytime and sea breeze during night. So that is what we are going to study. Sure. I'll read. It is my turn, is it? Or directly will write? Directly Right? It's right up. Periodic films. First write white for this periodic films. डायरेक्ट लैंड एंड सी ब्रीज नहीं लिखना वो तो अभी B1 B2 में जाएगा ना right away. Winds which blow at regular intervals. Winds which blow at regular intervals due to changes in periodic conditions. Changes during periodic conditions. And also due to differences in pressure and temperature. Differences in pressure and temperature. Now you write B1, land and sea breeze. It is careful with the word differential heating and cooling. I'm writing the word here. It is the differential heating and cooling of land and water is responsible for these winds. Of land and water is responsible for these winds. You need the entire hydrosphere or only some parts of it? I will just summarize the entire different parts. You already marked and kept it there. No. I did not study it yet. I will study it. Right, will come while I'm explaining, you keep marking. Anyway, I'll explain the whole. But if I could address your problem, it will be easy. So if you visit the seaside area during land time, you will get breeze from where? Land or sea? Sea, na? क्यों ऐसा है? So that breeze which strikes our face will have a lot of moisture in it. But by the time you go by 12 or maybe 1, land is very hot, no doubt. Sea wind is also hot, but not so. During night time, what happens then? The cooling of the land is very fast. So where will be the high pressure? In the land. And where will be the low pressure? In the water. So from land, the breeze will blow to sea. So that is what we say. These are which winds? Periodic winds, blowing from one direction to the another as per the time limit. Okay, one more sentence that will end this. During daytime, land is heated faster
creating a low pressure than the sea, put hyphen, high pressure. Next point. Entirely opposite happens during the night. Entirely opposite happens during the night. Hence, these winds are created. Hence, these winds are created. Now let us go to summer monsoon. I have given very short, but exam में जैसा marks है उसके accordingly. This is sort of brief notes for your understanding. Summer monsoon. सर ये चैप्टर ही नहीं करने वाला है। कौन सा? ये वाला। ये है क्या? हमारे पास ऑप्शन है कौन से चैप्टर पढ़ने कौन से। हाँ वो तो 10th जैसे तुम्हारा मैम पैटर्न कर दिया अच्छा है. But is this chapter coming tomorrow? No. Really? We will see. Tomorrow your hurdle is your hydrosphere, na? Yes. That It's confusing a little. very good. I think you were absent in my lectures during those things. Why? I was not able to come because of some emergency in my village. Now write summer months. Vertical rays of the sun. Vertical rays of the sun on the major land masses. Creating high temperature and low pressure. Creating high temperature, low pressure. Next point. The adjoining sea, in the adjoining sea, cool air, high pressure is developed, which forces the winds. कहाँ से काम होगा? From sea to land. From sea to land. Last point. Heavy monsoon, high monsoon, or good monsoon. Heavy monsoon. Actually, monsoon कभी heavy नहीं होता. Is created during June, July, along the plains of India and China. Hence, termed as summer monsoons. वो जो जून है ना उसके पहले मई मंथ में ऐड कर रहा हूँ because in your textbook is given May, so I just read how quickly and shortly I've given, but है actually detail में Easy to understand. but then read your volume as well, because if you feel you want a briefer one or a lengthier one, I'm ready to try till this. I've summarized everything, है ना? तो फिर भी एक बार टेक्स्ट बुक का भी रीड करो, वॉल्यूम का भी, and then come back to both, and I'll give you winter monsoon. Hey, he has landed in the airport with Air India One. Yes. मुझे लगा चॉपर में उतना बड़ा प्लेन टूट रहा है इधर. अभी वो एक छोटा सा वीडियो देखा, that big airplane. तो पूरा प्लेन लिया था बिजनेस क्लास के लिए. नहीं, हाँ. अरे प्राइम मिनिस्टर का जो प्लेन है that has landed here. He didn't come in a chopper.
Yes, I know. Hmm. He took that place so that he could travel in the business class. Hmm. Prime Minister. तो पूरा प्लेन उनका ही है, प्राइम मिनिस्टर के लिए ही है वो प्लेन। हाँ, Wherever he goes, he travels. ट्रैवलिंग करने के लिए। तो फिर एग्जीक्यूटिव क्लास, इकोनॉमिक क्लास किधर है, उधर के पैसेंजर। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है एयरफोर्स वन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है एयर इंडिया वन, पूरा प्लेन उनका ही है। Whenever he goes, he has to travel in that only. It is highly safest plane in the world. No radar, no hitting of missiles, nothing can hit. वो अपने साथ पूरा पार्लियामेंट को लेके उड़ सकता है, and he doesn't want to come down also 45 days. He can remain in the air, and वहाँ बैठा बैठा न्यूक्लियर बटन भी दबा सकता है, समझा क्या? ये भाई एग्जीक्यूटिव क्लास एग्जीक्यूटिव वो एयर इंडिया नहीं है. This is a very costly plane than the president of America. Okay, sorry, वो दूसरी जगह. And so stuff work he is landed in पहले बार नवी मुंबई में इतना बड़ा प्लेन है, चल अपने को मालूम नहीं होगा, मतलब मेरे को पहला लैंडिंग ही उसका था. नहीं पहले मतलब टेस्टिंग हुआ था, बट ओपनिंग के बाद पहला लैंडिंग उसी के प्लेन में. which one when India, Pakistan, China were in that Beijing ना, तो one side China का पाकिस्तान का कार्टून प्लेन देखा मैंने. उसके साइड में इंडिया का इतना बड़ा प्लेन था, उधर look at the औकात of India. उसमें क्या 6-7 लोग उतरा, इसमें तो अकेला सिर्फ मोदी जी बाहर था, इतना बड़ा एरोप्लेन. Did you read it? Feel proud of this moment is there. I'm just waiting for the day when maybe the first day I booked a flight from Navi Mumbai International Airport, NMIA. And I should be the one flying from here or landing here. Landing to sure karuga, that's for sure. By the time international airline should start, I will only go. इंटरनेशनल के लिए बहुत टाइम. नहीं एग्जाम जो बोला क्या? एक साल में नहीं होगा. क्यों भाई? अभी तक तो नॉर्मल डोमेस्टिक एयरलाइंस है. तो इंडिगो का फर्स्ट फ्लाइट है. हाँ. 2 दिन पहले अडानी भी आया था, ये सोच रही है. देखना है. वन ऑफ द बेस्ट. बहुत बड़ा एयरपोर्ट है. सेकंड लार्जेस्ट 20 एयरपोर्ट हाँ इन इंडिया. 2036 में पूरा कंप्लीट होगा, इतना बड़ा. एंड दे आर कनेक्टेड बाय लैंड, ट्रेन एंड वाटर आल्सो. वहां से आएगा अपना. अच्छा, गेट ऑफ इंडिया जेट किसी तरह के उतरेगा, स्टीमर में आ सकता है. अटल सेतु तो ऑलरेडी है. गाड़ी स्टेबल के बीच में आधार पुना वाला का हेलीपैड लगा हुआ है, जिसमें से वाटर आई वाज इन दिस क्लब पर्सन. आप नहीं समझ इसको ब्लडी से नहीं देखा नहीं. आधारपुर से नहीं. गोएंसी पुणे डालपुरा वाला दुनिया का सारा वैक्सीन इंडिया ही बना था, पता है. एंड यही बना था डालपुरा. स्टार फार्म में उन लोगों का ये रहता है. थोड़ा डैड ने जितना कमाया ना उसका बेचा. तो अभी कोरोना में भाई साहब ने जितना भी दुनिया का वैक्सीन है ना, सब इंडिया में ही बना. डालपुरा वाला होता है. एंड सच अ बड़ा कंपनी ना, मेरा दोस्त लोग बोलता है वैक्सीन बनाने का जो कैपेसिटी इंडिया में चार बिजनेस पार्क से. उसका एंड आउटस्कर्ट में रहेगा ना उसका बिजनेस. हाँ, अभी स्टेबल वाला वो आउटस्कर्ट्स में है, पर जो बिजनेस पार्क से कितना बोला इसका? लाइक मैं थी तो 300 थे. अपना बोला कि ना 30 को बैठी हूँ. ये 300 बड़े में आप बैठा है क्या? सुन मैं अरे घोड़े. तू क्या लगा कुछ भी? हाँ इधर भी तो है गोल्फ क्लब. वो ये महालक्ष्मी ना. नहीं इधर है, कारगर में है ना, ये कारगर का गोल्फ क्लब है. अच्छा बस का. हाँ हाँ वो तो है. अच्छा. आप उधर क्यों थे? ठीक है. वो सेक्टर पार्क के ऑपोजिट में जो. हाँ बड़ा है काफी. I'd gone inside the canteen. बाहर भी बहुत बार खाने की बहुत. कितने मजा. हाँ, तो खेलने के टाइम पे उधर अंदर किस तरह से ये पैक मैं खेलता है उधर. तू गोल्फ हाँ, स्टिक के बड़ा भी है क्या? आपकी पहली बात स्टिक मेरे कंधे तक आता है. तो फिर क्या इधर पकड़ के मारते हैं? चल लेट अस नो. छोड़ मैं मैर कभी नहीं खेलती. चलो लेट अस गो टू विंटर मंथ्स. So your dad is into this company. Then how we are दोनों का ये रहता है. ticket टिकट बिछाना. she also did get ticket with that. हाँ, उनके रहते हैं ना agents.
एक्सपीरियंस तो वहाँ पे जाना पड़ता दूसरा मेरे 4 लाख वो जो हॉर्स है ना इट इज वेरी डेंजरस उस पे बैठना मुझे डर लगता है लाख सही मारता है हाँ वही तो बोलता हूँ मैं और दूसरा थोड़ा सा अगर उसको ग्रिप मारा पीठ खुल जाती है पूरी। लेके जाके किधर अपने को ठोकेगा 300 बड़े में कैसे बैठी समझ में मंकी मंकी लेकिन है यहाँ भी विंटर मानसून 6 साल में गए हो है सर में 300 इट्स ओके ये अंडरस्टैंड अंदर की बात every year every day विंटर मानसून let us consider Exactly. very cross question विंटर मानसून राइट तो थोड़ा मजा आता है ना it is the season of winter it is the season of winter जो जैसे वैसे मान लो it is the season of winter and the atmospheric conditions are just opposite of summer and the atmospheric conditions are opposite क्यों बोला अभी लैंड में क्या रहेगा जो ऑपोजिट है ना लैंड में हाई प्रेशर रहेगा और वाटर में लो प्रेशर है इज ऑल्सो अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट summer opposite of sun high pressure zone develops is developed or develops over a major landmass area and मैंने रॉक्स तक पढ़ा था easy है हाँ मैं एडोस्पेक्ट समझा देता हूँ by the time these guys will be writing some notes I'll sit with you and complete that high pressure zone is the major landmass and a low pressure zone over the Indian Ocean over the Indian Ocean I read more than half of the chapters from your but you think what all the part in biosphere you need hydrosphere sir. I put a star. Okay I want for degradation and hydrogen. you also want I right on next winds move from land to the sea winds move from land to the sea winter monsoon होती है and are generally dry and are generally dry so least chances of good rainfall less chances less rather we compare it to superlative less chances of good rainfall तो chance का superlative क्या है chance is not a noun word na so supporting word का कहाँ से superlative next it is the Coromandel coast be careful with the spelling of Coro MANDEL बहुत लोग MANDAL लिखते Coromandel नहीं Coromandel तो उस ब्रैकेट में डाल दो TN and AP तो अच्छा and AP along with this country I love Vietnamese I am going to Vietnam in December public को बोल दे तो चलेगा पहले खाली कर लीजिए वो तो Air India Vietnam and Japan but our currency is very strong yes okay. So you can take 10,000 100 or something so you take 100-200 rupees you will live in a 5-star hotel खाना पीना तो royal right it's cheap कौन सा country है जहाँ इंडिया का 20,000 is equal to 1 crore rupees 1 crore Vietnam and Japan 100 rupees is equal to some 1,000 or 500 वो बात हाँ अच्छा का डॉलर देखेगा डॉलर नहीं है आप 2,000-3,000 लेकर गया तो उधर तो हम करोड़पति बने अच्छा ऐसा भी कंट्री है क्यों नहीं बहुत सारा कंट्री है जहाँ इंडियन करेंसी Oman best is Iran
ईरान में हमारा स्टॉक है नहीं? सबसे कम है। हाँ हाँ ईरान का क्या हाँ, है रेट मुझे ना कुछ तो 1000 के आसपास है। ईरान में ईरान दोनों में से कोई एक। ईरान है हाँ क्या है करेंसी रियाल ना रियाल। मालिया अरे बहुत सही में से ईरान रियाल है लेता मिनटा रियाल और ईरान रियाल तो 0.0021 इंडियन रुपी सबसे तो कम। हमारा बहुत ज्यादा है स्ट्रॉन्ग है हाँ 1000 डालेंगे वो सबसे लोएस्ट वो वैल्यू उसी का है। 1000 Iranian riyal equals to 2.1 rupees. हाँ अगर मैं इधर से 5 रुपए लेके गया तो तो आई एम गेटिंग 2000 ईरान उससे भी ज्यादा उसका सबसे कम वैल्यू Exchange rate. पूरे वर्ल्ड में। ईरान का हाँ चेक ईरान दिस इज शॉकिंग पापा ने तो यही बोला। इंडिया ऑयल खरीदते रहते फिर वहां से है ना That is change Iran to Iraq. What Modi has done in क्या बोलते हैं 10 or 15 पागल हो गए क्या? इराकी इंडियन रूपी बोला ना आपने? Iraqi dinar हाँ like 1000 Iraqi dinar in India is only 67 rupees. So not even 70 So rupees. Iran is lower. तो तुम बोलने की तरह it's very cheap. हाँ हमारा करेंसी उधर बहुत ज्यादा है मतलब हम लोग अगर 100 रुपए में करोड़। 1000 रुपए लेके गए तो 2 crores रहता है what kind of sometimes I feel maybe in next 10 years na our passport value should be much higher than the value of America. तब तक तो डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं रहेगा He's ending in 29 Jan 23. Because he did a very what impressive job. No, नहीं वो पैसा Tariff more. चलो, हमारा लेकिन पैसा वो- जाने जानेगा नहीं इंडिया उसको भरपाई करेगा उसको if Kuju businessman is not very weak चाय वाला even प्रोफेशनल thou him like in such a dungeon सबको नानी आता है टैक्स मैं नहीं डाला और मतलब मेरा ही होगा which point did I stop? Vietnam and Japan na last point these winds blow का वो डीडी Didi वो Didi ये मुझे हर रोज बताता है डीडी का कौन है Didi Bengal DIDDY and the Didi Bengal of the chief of Bengal right the winter monsoon blows from this winds blow from northeast so rightly referred as these winds blow from northeast so rightly referred as northeast monsoon winds अभी एक काम करते हैं I hope my all children are tired of writing we will only read we will only mark writing करें फिर इसके देखो मतलब इसको थोड़ा सा पढ़ाना है तो by the time you guys है ना अब local winds में we are going to do Lu, Suan and Mistral this we will keep it for the next lecture why next lecture because here I have to explain in depth many things. now look at this local winds I am only reading keep your pencils ready and I will read and you guys can mark local winds are restricted to open bracket a certain place only close up bracket because now I say these are local winds then I have to tell ये कौन सा locality में blow करता है ये इधर पाकिस्तान हाँ नहीं कुछ नहीं they may be warm or cold depending upon underline the area from which they blow इसने बोला क्या common sense है common sense क्या है इसमें अगर tropical area से blow करेगा then definitely it will be warm if it is hot or warm if it blowing from the polar region definitely it will be cold but the question arises where it is blowing अभी a warm wind blowing into a cooler region एक example अरे ये remember अच्छा पढ़ाई किया है Oasia नहीं किया अभी पढ़ा Proceo है ना Labrador is a cold current
That's for sure. Now, let's read the next point. For example, it is Harmattan is a hot local wind of Sahara Desert. देखो Harmattan से समझ जाने का एक कोई नाम ही कुछ अलग है. Now let us go to Lu. In the plains of underline northern India and Pakistan, a very hot and dry winds. Underline that word, hot and dry. In the west, it is known as only underline the word Lu. देखो temperature देखो open bracket 45 degree to 50 degrees Celsius. Amazing, huh? Temperature. And underline that word sunstroke. Now this is Fuan and Chinook. A strong warm wind develops, underline, leeward side of the Alps. Alps is what? Mountain. Mountain range. Mountain range. Due to regional pressure gradient. Underline only the word pressure gradient. Stable air is forced to cross the barrier. What is this barrier? Mountain only. Okay. I'm reading. As the air ascends, underline the word ascends. Ascends के जगह पर ऐसा arrow mark डालो. Hey, boys and girls. ऐसे. And अभी दूसरा word भी आएगा descend तो फिर ऐसे डालो. Easy for you to remember. On southern slopes of Alps, it expands and cools. So why it is expanding? When the air is moving up, it's going to be hotter. Already वो गर्मी है ना? If it is going to become hotter, it will expand or contract. Expand, sorry. And when it cools, Contact. it expands and cools. Condensation takes place. Underline the word condensation. Underline the word saturate. And put into bracket rain and snowfall are highest. देखो उधर भी Alps में भी rain और highest slope देता है. ये कौन सा wind है? It is Fuan. Mistral अभी आएगा. Sorry, Chinook बाद में आएगा. Okay, however, put that arrow down mark. Descending the northern slopes. अभी वो descend हो रहा है वही भी. The wind experiences underline an increase in pressure and temperature. Now the air underline compressed and warm. अभी upper zone से lower zone में आ रहा है. और automatically उसका temperature कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा. है ना? And now look at the next line. What is the next line? Definition of Fuan. It's a very important. It reaches the valley bottom open bracket as a dry, hot wind called Fuan. Or phone. It's not phone, it's Fuan. Close bracket. The temperature underline 15 to 20. The wind is used for underline melting snow. And what is this hastening the ripening of trees? Very good. उधर लिखो speeding. गर्म हवा है ना तो grapes को जल्दी फिर वाइन फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं. वही है फिर क्या? Similar kind of wind. सर तो grapes के ऊपर गर्म हवा क्यों नहीं मारते? But that one, will it hamper the grape or will it ripen the grape? वो कौन सा गर्म हवा क्या? केटली से मारेगा क्या? ये natural है रे. Abhi, have you gone to this valley, Sula? I have not gone. Yes. You have gone? Yes. Taste. So they say they give you these what is that? What Grapes. Grapes. They ask you to taste it. Yes. And you know Nashik is generally cooler. और winter में मैं गया 2-3 बार उत्तर प्रदेश में the temperatures are 4 degree, 5 degree. It is 5 degree मतलब मैं तो हिल जाता था. And वो पानी में खड़े रह के देखता था अभी तो घुसूं कि नहीं घुसूं. Because it is very cold. But ये जो गर्म हवा है ना, there are some machines that only will blow the air. You and me cannot do. And I don't know if you have gone that valleys in not in India, some Europe. You know the grapes are crushed, not crushed, squashed by the human beings only. Yes. By their legs. Legs only. And all the she ये क्या है? वही पीते हैं. तो फिर क्या है तुम ऐसा बोलता है you know मुंबई बड़ा पाव का नाम पाव क्यों है सर नहीं मालूम सर एक टाइम ऐसा होता था उसको उसी लिए उसका नाम पाव पड़ा नहीं डोंट नो दैट इज द मीनिंग खुला हुआ पाव. ह्यूमन बीइंग का पाव से उसको भूनते थे
And देखो अगर हम your mother when she is blending this one kneading with the hand भी take it. सोच अगर पेंसिल से करेगा तो she ये करके आता है and then फिर पाव बन के बाहर आता है. अभी तो machines है. Machines से. So imagine a person cleaning his leg and putting all that. जी मैंने जो सर अभी खाने का है बड़ा पाव. So similarly, these winds, they are responsible for the ripening of what? The grapes. Okay. Now let us similar kind of wind in US and Canada move down the west slopes of Rockies and underline Canada and US. यही wind जब कनाडा और उधर रहता है इसका नाम चिनूक रख दिया और शायद इसी के ऊपर से वो चॉपर भी बना. तो चिनूक इज वेरी पावरफुल चॉपर. दो साइड में वो प्रोटेक्टर देखा ना. ठीक है. Let us go to Mistral now. Yeah, और ये भी देखो. The word Chinook literally means, please circle that word. Snow eater. It is beneficial to ranches east of the Rockies, and as it keeps grassland clear. What is the word ranches here? We can say blow the hot ranches. वो उस एरिया का ग्रास को वो अच्छा लगता है, because जितना भी स्नो गिरता है ना उसको मेल्ट कर देता है. Mistral. During winter, open bracket, areas adjacent to highlands may experience a local wind, close bracket. Second point, it originates over underline, it is snow-capped mountains or highlands, close bracket. These winds have been given local names. मतलब अलग-अलग जगह पर local names का. The most famous is underline, Mistral, blows from open bracket, Alps in France towards the Mediterranean Sea. I can say Mistral is the only name, but Mistral is one of the name, blowing from where to where? From France to the Mediterranean Sea. These local winds have, under open bracket, a considerable effect on climatic conditions, close bracket, notably on underlying temperature of a place. So here we rest our chapter. So you guys can read. By the time I can switch on some videos also, and by the time the week clears is done. So I come good. You come to that bench. Don't disturb them. They will watch your time. They will enjoy their time. So go to the third bench. I'll come there. By the time I'll flip the video, take your textbooks and all queries. Guys, watching the video, you start writing slowly and steady. No hurry. If I get that video of the Chinook wind is good, but you want to see the Chinook chopper, India actually must be, and only country called America manufactures. मुझे पता है Chinook क्या. तू कब देखा? नहीं वो तिल्लो का टाइप का. तुम्ही बोलता है. अंदर जो लोग कैसे ठीक है. उसके दोनों साइड पे दो साइड में प्रोपेलर था. They are connected to the main body of the chopper. फिर क्या नीचे क्या हवा के निकले? नीचे yes seen it. अभी तो उधर सर्च कर रहे हो देखना. ये देखो. हाँ ये इसका कैपेसिटी यूज है. अरे बाप रे टैंकर अंदर है. हाँ ये ओनली अमेरिका ही बना था और इंडिया हैज सम नॉट 10-15 I don't know but yeah. Chinook power. You give your subsidy. Why do you laugh? These are ads only. Yes. Hey, you sit down. Look how powerful it is. So wind Chinook, the word has come from clearly. They can transfer to the It removes the snow from that face because of its power. maybe. Correct. इसका दिमाग है. चलने का देखते हैं. Let's. Maharashtra 47. ये नीचे लिखा है. इधर है. Night stoppers Maharashtra 47. एमएच आके महाराष्ट्र आप जगह नहीं. कुछ भी. मैं भी डर गया कैसे महाराष्ट्र में आया. Prepare to be captivated by the extraordinary legend of the sea. Just you guys watch it, then you write. A true icon that leads to the skies with ice.
With its awe-inspiring tandem rover design and unmatched versatility, the Chinook has transcended the boundaries of mere machinery. At first glance, it may seem contradictory that the KH27 Chinook possesses both a massive carrying capacity and impressive speed. V-shaped and waterfall, na? Wait, was features. Wonderful. However, Yes, for ma'am. closer inspection, Now we have this valley. magnificent machine unveils a multitude of features that These have are firmly established two its lands. position as one of the world's most Right? recognizable. When the river flows from here, try to understand the diagram of box here. It stands as a symbol of This is the unbelievable land strength, mass. unwavering This one. reliability, Yeah. and limitless adaptability. Main piece, one part of that land From military is operations very to global endeavors and ignition. humanitarian missions. The Might Chinook be is firmly sediment. etched its name in the annals Next of time it human goes, history. one crater is developed. You understand? Okay, it's okay. It goes, Join it us as goes. we So delve it might be vertically going down. It is that KH47 I-shaped event. Whereas if there are two land masses The like vast this, expanse of and the the river flowing known as the Chinook across and try to cut on both the sides of the river. When I'm cutting both the sides, the valley will meet like this. So edge of pattern, it is a V shape. Tall aircraft. And what they have written is a narrow valley that Legendary story. profiles adjusting the V. It is formed from a stream eroding 21st downward, a sidewards cutting the Chinook. spread its wings Okay, for down. the very first time. These valleys are formed in the initial stage of the river at steep slopes, on a gentle slopes. Reflecting the tradition of naming US Army helicopters after Native American tribes. The Chinook drew its name from the Chinook people, an indigenous tribe residing. If you see a landmass like this, we actually is inflationary. The wind is blowing here, taking some parts down to where it's flowing. Wind is blowing here, some part. तो ये पूरा एक level पर है. ये जो part है, fall. And if at all rainfall is there, it might be has a small stretch of pond like. Chinook group is working. So that's why it is hollow Carrying out. created by a deflation not of the wind. This case of wind catch. Refugees. Read, मेरे समझाने से मत समझ. Learn कर. As the years passed, production continued tirelessly, with over 1,200 Yes, Chinooks manufactured by 2012. Each one bore the mark of excellence and the promise of unwavering कोविड service. के टाइम में मॉम के साथ फ्लाई कर रहा था वो प्लेन में बैठा. कौन सा होटल ट्रिप बाबा ऐसा कर ले बस. बाहर में मैं हेड ऑफ सिस्टम कुछ करता. पहुंचा कि सिग्नल साहब. Let us check some topics for this. This I need to one. I'm finding a powerful laptop for me. Cost me around 1 lakh plus year. पर उससे आपको लैपटॉप ही चाहिए कि घर पे रखने का है? लैपटॉप नो तो सैंपल रखते हैं क्या? नहीं, अगर आपको डेस्कटॉप चाहिए तो फिर मेरे पास है. there are many options. किधर ऑप्शंस मतलब क्या होता है तो जैसे लेनोवो का आइडिया फिर आइडिया अरे सेंटर भाई मैं उसको लेके मैं अपलोड जा फिर क्या डेस्कटॉप की तरह की मैं ही लिखाऊं क्या डेस्कटॉप घर में तो पड़ा है अमेजिंग इन्फ्लुएंस मैं एथिक्स सीरीज से एथिक्स इज वेरी Hey guys, look at this one. आपको फास्ट प्रोसेसर चाहिए ना मतलब But ultra 5 होता है तो और भी इसमें आपका सर नॉर्मल यूज के उससे भी काफी Asus F40 काफी है इतना 40 Asus नहीं देखना पड़ेगा बहुत फास्ट है आप 10 Vivo मिनट invitation. रखोगे ना उसको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा नहीं कर आज लैपटॉप है There's no shepherd of his plans. देखो बरसात था आया ना That's the wind direction is like that. Okay. particles. Now up to here, it is just only picking up less of, and when it comes here,
it tries to pick up some loose part of the tangents and throw away something. So over the course of time, you can teach two horns coming. Yes. Like a good. Two horns. And this is when it had when mirror of the it is a crescent shape and dune, which is formed due to strong interaction in specific direction only. एक ही direction में wind blow. Yes. और मर्चांस ऊपर से satellite picture में मैंने दिखाया है. मतलब मर्चांस. So you are absent. अभी learn कर read कर. So, that's the food for you. देखो they are showing one. Yeah, send over. It's a note उसका नाम steady. And droplets start this exposed to clouds and eventually to rain. The elevation at which this happens is a lifting compensation. Because compensation causes latent heat to be released, as the air rises above the compensation level, it keeps on cooling automatically at a much slower rate, since part of the cooling effect into expansion is offset by heat released by पहला बहुत बच्चे लोग को मैंने बोला ऐसा it is this like the rate drops by almost half, approximately 0.63. This reduced rate of cooling is known as the white effect. Eventually, the rising air reaches the top of the earth. At this stage, it will मैंने अभी and likely we have lost most of its humidity, so we are now dealing with cold, dry air. For the living areas have and electricity rushing down the river. The opposite phenomenon. Yeah, that's the. ये longitudinal dunes है. Normally dunes are like this. How much? है ना? Well, because there is But- no dry. Now we have a dunes which are running parallel to each other. One degree. Why parallel? ये एक dune है. Twice ये भी एक dune है. ये भी एक dune है. और ये जो red color part है, this is the wind. Because this is the main stream of the wind. If I show this wind, ये भी एक soil का, ये भी एक soil. When this main part is trying to clear, the edges of the wind is trying to cut the edges. So that the main stream of the wind is going to So they push it again out. की तरफ ऐसे जो draw करके. What is it? Scale? Particularly during the second month. These are landmarks. Wider lines. Yes. Now these two parts, the wind is trying to vacate. ये main of main to and main एक तो नहीं रहेगा ना. It will keep the edges from falling. Because the Either way, it's powerful. because Main stream has removed all this soil. It continuously. Continuously, yeah. So wind को perennial मत करो. Maybe it's I subscribe. water को perennial करो. Watch. समझा? So due to these two cutting, the edges are maintained and the main stream of it is slowly. So ये भी dune ही है. Maybe I should walk away. Beautiful dune. अब तो ये जो बात है ना वो दो तीन बार में कट कर. What's that? और ये भी sand dune है, but it's unlike this kind of sand dune. Yeah. Yes, Mr. Baker leg. William's waiting. Come on, man. You're just in the middle of my story. And turns out authentic would be perfect. Outward stuff into my one. Past ice ages, or that the climate was much warmer at the time of the dinosaurs. But did you know that large scale I don't know. You know, bitty. We need to keep with that even. One. Want to see Mr. Lee, huh? One look is the. So hydrological cycle is also known as water cycle. Yeah, same man. Want to explain? No. मुझे कुछ नाम सुन के. नहीं, hydrology मतलब भी water ही है. Okay. ये उसका है. One. Hello everybody and welcome to You Have Control. In today's video, we are going to look at the Food effect as well as why it happens. So let's begin.
And the first question that all of you will be asking is, what on earth is the food effect? Well, the food effect is a process in which one side of a mountain is then the other side. Now don't tell me your Let's look at why this happens. Now, when across the beds falls the right, opinion. it Kenya. cools Then we still the environment. I know we can. And either be saturated or dry. Let me hear These it are first, those then I believe adiabatic the dry adiabatic lapse rate. In Australia, the pilot license are very quick and same minute then. तो सरदार जैसे कोई आएगा Sir, I want to understand L and loop and what to अंकल वो बोलता है सर टेक ऑफ तो आ जाता है लैंडिंग का गियर कितना मुझे मालूम नहीं सर अरे तू उड़ाने कौन बोला टेक ऑफ कर लेता हूँ सर लैंडिंग बस आपके भरोसे बता तो तुझे लैंडिंग नहीं आता अरे कुछ नहीं होता ऊपर का रोटेटर है उसको बंद कर दे अपने आप लैंड होते हैं now look at I give you the what is tide and what is a wave Tide is the rise and fall of sea water. oscillatory movement waves में you know what is oscillatory waves going अगर जो waves को देखा तो ऐसे ही रहता है ऐसे ऐसे then ऐसे whereas tides are like this है ना which is coming up till the shore rotational and then coming back Also, okay, after. whereas waves are like this so there are series of movement of water which is dancing है ना तो waves में ऐसे दिखाऊं कैसे दिखाऊंगा ये waves whereas tides are yes actually these are tides now then you know what is a new moon and what is a full moon Yes. during a new moon what is happening all the three planets are at one line but ye yaad kar earth is in the center and moon and sun are to be adjacent तो जब अर्थ का शैडो मून पे गिरता है इट इज अ लूनर एक्लिप्स जब मून का शैडो अर्थ पे गिरता है देन इट इज अ सोलर एक्लिप्स इतना ही सिंपल लॉजिक and a simple word again. The fall of sea water and its movement towards the sea, not towards the land. Fall of sea water. ये जो मेरा movement था, it is from sea to land. अभी ये land, sea water is rising. Instead of going up, it is falling back here. Okay. Oh, pull नहीं. So maybe the gravitational force is more here. It is rising, but it is not moving ahead. It is falling on that same spot. So that is the ebb of the water, and it is low water is called as low tide water. And here the high tide. The ocean currents, the ocean current, that देखो, two types of currents. One is warm and another is cold. पहले तो तू उसका नाम याद. फिर वो cold है कि warm है वो. I think मैंने एक chart से दिया था आपको. इससे ले देखिए. तेरे पास है. You are absolutely still yes. And then where it is moving, which are the places it is moving? जैसे मैं simple है समझता है. Great drift है ना पहला ही वही है. Warm current, cold current. ये तो causes. ये causes. Yes. समझ में है? Confirm. Salinity, temperature. हाँ. देख अभी यहाँ के गल्फ स्ट्रीम इट इज अ वार्म करंट देखो वैसे गल्फ स्ट्रीम इज मूविंग पता क्या है डूइंग The Gulf Stream converges not the that is at which point वो यार where it is converged and wherever the warm and cold current comes now the temperature is so absolutely good that it is supporting the growth of that plant planktons क्या होता है small fishes which are responsible for the growth of large fish and that is the greatest ground for fishing. It is neither too hot nor too cold. And fogs are more. Fogs बोल नहीं सकते but है responsible. अभी तो high pressure धरन के ऊपर जब ठंडा पानी डालेगा फट से वो निकलता है वही है fog but ये natural man ठीक है big notebook ले write all the terrain notebook ले write all the streams पहले warm करने की cold करने और मैंने 4-5 पॉइंट बोला सोर्स वेयर इट इज मूविंग एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस बस इतना ही लंबी
they are going to go for the exams. इसके पहले के चैप्टर आपने मेरे साथ में आपने मैंने आपकी क्लास अटेंड की है हाँ तो ये मुझे याद है कि तो नहीं था यार सर अर्थक्वेक्स और Completed? वॉल्केनोस में मेन पॉइंट्स के याद सर कौन सा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस क्यों वो तो दोनों एक ही है ना आपको 5 मार्क तो एक काम करना टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस वो तो तुझे मान कॉजेस अर्थक्वेक्स उसका स्केल पूछे रिक्टर स्केल मार्शली स्केल व्हिच इज दो ही होते हैं मोर पॉपुलर इज रिक्टर and how many types of waves are there p waves s waves and t waves वो कर ले प्राइमरी and वो zones आएगा कौन सा volcanic zone 3 टाइप का जोन है ना एंड अर्थक्वेक जोन भी है बस इतना ही कर और क्या कॉजेस दोनों का कर ले सिंपल है पहले ये कर दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग सर तो वार्म और कोल्ड अलग अलग लिखो हाँ एक काम कर वार्म करंट डाल उसके अंदर जो भी वार्म करंट है वो नीचे नाम लिखते चलिए अभी लैब्राडोर इज अ शॉर्ट कोल्ड कर वार्म करंट से स्टार्ट कर सर कोल्ड करंट्स कौन से लैब्राडोर है और भी है ना कोई ओके कुरोशियो एंड ओएशियो बोथ आर वार्म करंट लैब्राडोर है और कौन सा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दैट इज अ कोल्ड करंट ये टेक्स्ट बुक में भी लोग लिखे तो घर जा गूगल में मार क्या करना एंड वार्म एंड कोल्ड करंट इधर ये the North Atlantic Drift is a warm Atlantic Ocean current. तो नॉर्थ अच्छी वार्म एंड नॉर्थ कमिंग इन टाइम हो गया सर ने क्या बोला था कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं स्ट्रीम्स स्ट्रीम कहाँ ओरिजिनेट होता है एक बार देख जल्दी बोल रहा In the Gulf of Mexico. but also North Atlantic Drift that originates Gulf of Mexico. but it is Through the Strait of Florida. yeah originates Through the Strait of Florida. Gulf of Mexico और खत्म कहाँ पे होता है Pack up, you two guys. Just let him sit and write this. Let us say exactly. How is your studies going? All good. Tenth standard, you are the topper. Ninth standard topper to the 10th standard. I am a class top Ooh, good yeah. There in that. Why? Yeah, good. Time लगेगा. Yeah, but I can't. yeah It's still the Strait बाकी of चैप्टर में बहुत लोग हो गए आपके लिए हमारे. क्या नहीं हो रहा आधे अलग टॉपिक्स हो गए और यहाँ पे है told अच्छा ना you should be the okay so best of luck लिख के आराम से जा नहीं सर घर पे स्टडी कर लूँगा कर लो यार हाँ